Okay, we are live now. Good morning, everyone, and welcome to another session of Sustainable Saturday. I am your host, Sandra, and today we have with us our founder and director, Mr. Pradeep Tripathi. Pradeep sir is very deeply passionate about his love for Mother Nature, and this passion is what inspired him to begin his Green Yatra, that is a green journey, way back in 2008, which now 15 years later has grown into a movement of over 100 corporate thousands stakeholders and even more beneficiaries, both human and non-human. His work has inspired many different companies to take up these kind of initiatives of restoration, rejuvenation, and conservation, all while improving common people's understanding of forest and native landscape. Today, Pradeep sir will speak with us about the work that Green Yatra has done over the years, the impacts it has had, the many accomplishments it has won over time, as well as the many challenges encountered along the way. So, sir, we are really happy to have you here today, and over to you. Hi, Sandra. It's nice to know after. I think the last time I was in the this season in the Earth Day in the month of it has been that 3 or 4 months back even. Yes. So it's nice to be here again, and I'm happy at least this time we are coming with on that day Earth Day we are just sharing about the initiative, and we did live from one of the forest in the in Pune. And today we are going to discuss about is you shared about how Green Yatra working the field of environment. We are entering in many new projects. We are keep innovating. We in Green Yatra is known as a very innovative organization because we see technology and innovation is happening in each and every field. So it should be in the field of environment, and in environment you see the new problems, new pollutants, these kind of things happening. Pollution is rising each and every day. So we should come up with the solution, which is we can mitigate these increasing pollution, climatic conditions. So how we can cope up with them, mitigate them, we can prevent them, try to neutralize them. So that is what Green Yatra are doing, and lots of project we are doing. We are in the water body restoration. We are in the tree plantation, especially we focus urban areas. Definitely, lots of government agencies are doing in the rural area. But if we see about the cities, cities are suffocating, they are choking, they are becoming chimneys. So there is a heat wave issues, there are high rise of temperatures, then pollution. So these things are happening, and there is a very small green cover in each and every city. Then if there is a green cover that is non-native, so, and we are the, if you when it's come for the luxury of life, so we have 24 into 7 electricity, we have air conditions, we have uh, lots of things in the life. But when it's come for the environment and the fresh air, this is a just basic human right. Even this is a survival things, not a like the rights things. If I will say that we need fresh air to be healthy, and we are not getting that. Because if you see the statistic in last 1 decade, each and every year most polluted cities in the world are almost more than 50-60% cities are Indian city. This year, out of 50 most polluted cities in the world, out of 50, 39 are Indian. When it comes to the mega cities like Mumbai, Delhi, we are topping everywhere. And that is how we keep the focus, at least, we, the urban citizen deserve some better, oxygen and the native greenery. So that is how, and that's why we are starting many things, because we are finding the tree plantation is not the only solution. So there is a many project we started which can help out to mitigate these issues. So, sir, can you share with us a little about these new activities that have now been taken up by Green Yatra? Yeah, sure. I would like to, as I said, ki when we are working in this field and we are doing a lots of innovation and trying to understand what are the things working, what is not working. That is very important when you are doing any work. So if I talk about tree plantation, we are doing, but now almost most of mega cities are in getting saturated by the land space, because
for tree plantation, you need space. And that is, even we need parks, we need, open space. So you can't do the plantation in the park and open space, because our children, people need open space. So then we are using dumping yards mostly. But how many dumping yards cities has? How many debris yards cities has? So that's why we are coming with a kind of initiative. So we realize that this is not the only, going to work in a long way. So we started the native biodiversity parks and nature interaction centers, where people not just see the greenery, where people can come experience the nature, they can fall in love with the nature, they can get the understanding, they can get the glimpse of the our native vegetation, environment, greenery. If I give the simple example, if you ask any urban citizen, tell me the 10 different native species of plant, no one is going to tell. Mostly people are not knowing, which are, I'm talking about the purely urban, who are people who are not coming from the rural areas. And our kids, the future generation, know celebrities, names, magazines, names, brand name. But when it comes for the trees, they don't know what are and why. Apart from the oxygen, what is the urban biodiversity? So that's why we started these kind of centers where there will be large scale, with the open space, there will be shade trees, there will be butterfly gardens, there will be different kinds of grasses, different kinds of bamboos, there can different of local native species, where school students, college students can come and see. Okay, you have to get thousands of kilometers to get certain species, and you are getting in your city. So that kind of centers we are. So purpose is again bringing increasing green cover inside the city, with the supporting urban biodiversity, but at the same time making it more, the nature centric along with the human centric approach. So that is what. So Green Yatra is known as we say ourselves, we are a nature centric NGO organization. Work our approach is a nature centric, not only human centric. So it's an inclusive things we do. Then on the other project we have, which you are the one of the key, leading this project from front, climate education. So we realize that there is hardly any space left for the plantation, and everyone can't go and do the tree plantation. And the plantation should be the last thing when think about, when you talk about the carbon and these things happening around. So first we have to cut down carbon at the source, means from our house. So if people think, okay, helping the environment is just doing the plantation, cutting down the your tap water, less use of electricity, but there is a n numbers of ways we can do that. So that is a very important. What in individual, a single family, one person can do while sitting at home. There is no need to go and do the tree plantation. There is simple things, changing in the thought process, changing in the lifestyle, and some small learning. And I think you have designed this course, and with the Nidhi and the whole team has worked very hard. And you, as I said, you are leading it from front. So you have done the wonderful, because I have seen the lots of, and I will, and soon I will request people to just reach out to us and know what is the climate education. It's a very interesting, and this is not only education. The most important thing when they were designing, so when definitely this is a teamwork, where see we have already crossed the red line of the climate, change, and the you can see the natural calamities happening across the globe. So how to be prepared? Okay, I know the flood situation is going to happen, and I can't prevent it. So if flood happens, so we are not in the disaster management things training, but the basic things, when there is a flood is happening, such kind of water logging is happening, we are in the certain area, how to face it. So we are just, educating how to reverse it, how to mitigate it, and how to face it. Because there will be a situation we have to face it, the mess we have created. So that climate education is making us aware, mitigating it, preventing it, reversing it, and giving, a kind of confidence in things where we can mm, ourselves, prepare and face it. So that is about the climate education. Then we have came up with the Blue Yatra. So definitely Green Yatra is something everyone knows, but what is the Blue Yatra? So that is if you want to be the carbon neutral, and then we have not everywhere, but mangrove.
is the in the coastal areas in India, and we have very long coastal areas where there is a mangrove are there around 6-7 thousand kilometer long coastal area where the mangrove is there, and they are protecting us. They are protecting us like uh, the proper wall. They are a defense mechanism, first line of defense when natural calamity happen, natural disaster happens like a tsunami, hurricanes. So then we are entering in the mangrove plantation. And again, Green Yatra is not just going in the conventional things. Definitely, we follow the conventional things and basic methods, but we have seen there is a many degraded land. There we are using the lots of innovative methodology. So we have a dedicated team. We have a team who are expert and who has experience. So like a fishbone channel, where is tidal flush and waves are not coming, and there used to be a sometime, earlier there was a lots of mangrove, but now they are not. So how to revive them? So recently we did this method in the Mumbai, and I think we are in the some of NGOs in the frontline NGOs who are using this methodology and doing innovation. So we have a set of target to almost uh, by 2030 at least minimum 25,000 hectare of land where we will revive through the mangrove plantation degraded land. So this is one of the best method, and then we were doing the study, and so we came about the information. Even I was not aware that these when it comes for the carbon sequestration, they do the lots of carbon sequestration better than the terrestrial plantation. Almost 4,000 different species, trees species, different kinds of animal species are dependent on these coastal, the lungs, coastal lungs, we say that. So there is a whole biodiversity concept is there. Almost 3,000 different kinds of fishing, fishes and crabs, do the roosting and nesting in the mangrove. So they are not just, the simple trees. They are they they are very very recently we have shared a lots of posts. I will request people ki, please keep follow and uh, sign up in our the different social media handles where we keep sharing these kind of interesting detail ki, what are their importance. Then we have another initiative, cause related marketing, because there is when you come to the certain things as to the CSR, but there is a companies where they can partake, and then they would like to share the small contribution from their each and every project sell. New schemes are there, new, well, there is a lots of n number things you can do, and then some contribution will go to the environmental cause, where they can create urban forest, they can create the green schools, they can create the green campuses, then they can go for the plantation, they can go the water body restoration. There is n numbers of options. So it can give other companies apart from CSR things. They can think there, and the benefit of that, you are getting the tax benefit, you are getting the good branding and publicity and image. This can be the very helpful, because now people are very very conscious about the environment, ki how conscious companies are, because lots of greenwashing is happening. Even one of our team member, Mr. Anmol, had a full session on it. What is the greenwashing? So I'm not going to talk about it, but almost it has found that a numbers of companies are doing the greenwashing, and when lots of greenwashing is very prevalent everywhere in the corporate world, and then you come with some genuine that you can show the impact. This is we have created, and this is the impact on ground. And when you work with the Green Yatra, so Green Yatra is itself like a authentication of any things we are doing. We stress from the Green Yatra, whatever work we are doing, even we are doing in a small quantity. I'm not targeting large volume, but whatever we are doing with the dedication, with the passion, with the scientific approach, with the nature-centric approach. So that is a very important. Whatever Green Yatra is doing, that we try our best. It should be very authentic, and results should be visible. Anyone can come and check out whatever we are doing. We put the things on the social media to maintain the transparency. You can do the audit. So these any project we are doing, so that is a very important transparency, proper assessment, and the quality. It's not just doing, because I have seen lots of plantation is happening for the making record. People are making world record and planting trees each and everywhere in the same place. So people are planting non-native species.
Even in the one of the, we are the one of the largest planter of Miyawaki plantation, and I have seen and numbers of the Miyawaki people are doing, and most of are not doing in the right way. They adulterate is per their requirement, and then they are damaging the image of a beautiful nature. So it's a responsibility of Green Yatra. Whatever we are doing, we should follow the guidelines. We should maintain the quality. That is it's in our DNA and it's in our blood. So whenever you are working with the Green Yatra, so either with CRM, yeah, any, be sure you are getting something authentic and quality. So these are about 4 new project we are started these. So I share about briefly about them. For detail, people can reach out to us Green Yatra, reach out through the social media call and also for more information. So, what I am understanding from these new projects that we have started, sir, is that these are something that are targeting a variety of different age groups. Like your education is targeting a different age group, it's different audience, whereas your plantations and your mangrove, everything is targeting like a variety, a great variety of audience. So, what I'm wondering is, as you mentioned, that these are the goals and these are the things that we are trying to reach. What is it that you have in mind when you say that this is the impact, ऐसे ऐसे होना है, ऐसे ऐसे होना है? What is the impact that you are expecting ये सारे programs से? See, my our approach is like not a human centric, because everything people are creating focus and center is the human. कि ये चीजें हमारे हिसाब से हों, हम रोड बनाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम पेड़ लगाएं तो इस कलर का होना चाहिए। ये इससे मतलब नहीं है कि वो एग्जोटिक है, नॉन नेटिव है। सो आई विल लाइक टू शेयर, वी आर 0.01% ऑफ दिस होल अर्थ मास। हम 1% भी नहीं है इस धरती के, जो जितना है, लेकिन हमने डिस्ट्रक्शन 50% से ज्यादा किया है। सो वी आर द पीपल हु आर डिस्ट्रॉइंग अवर ओन होम. And so that's why my vision and focus is that ki whatever we are doing, we have everyone for something. If you want to contribute, if you are a school going kid, right, you are calling going youth, you are senior citizen, you are just housewife sitting at the home, then you are a corporate, you are a government organization. So how you can, so we have variety of for everyone. You come to the Green Yatra and you will get everything where people can partake. And the vision is that uh, if you want to mitigate the climate issues, and we have to take the collective approach. Means यदि एक गवर्नमेंट चाहे, ओनली गवर्नमेंट can't do that, only human being, the individuals can't do, only NGOs can't do. So this should be the collective approach, because ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं है, it's a collective problem. So if we come everyone come together, और जहाँ पे लगता है कि ओके गवर्नमेंट का रोल ये है, एक एनजीओ का रोल ये है, एक ह्यूमन, जैसे मैं एक स्कूल गोइंग बच्चा या एक छोटे से इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम बच्चों को जनरली इग्नोर करते हैं, दे आर द फ्यूचर जनरेशन, एंड नाउ आई एम हैप्पी कि दे आर वेरी अवेयर। जैसे हमारा ग्रीन कैंपस है जिसमें हम स्कूल्स को फोकस करते हैं, यूथ को, कॉलेजेस को फोकस करते हैं। तो हमारा विजन ही यही है कि दे नीड दिस अर्थ फॉर लॉन्गर पीरियड। If I talk about, I'm almost 40 plus. So मेरी life हो 20 या 30 साल. But if my daughter is just, she is very young, so she need it for the longer period, and there, उनको हमें pattern pass on कर दें. So that is very important कि हम सारे लोग इस अप्रोच को अपनाएं कि ये हमारी प्रॉब्लम है, ये पर्सनल प्रॉब्लम है। ये नहीं कि क्या फर्क पड़ता है, एक पेड़ कटता है या बिजली का पंखा चलता रहता है, बिजली जलती रहती है घर में, क्या फर्क पड़ता है। आप जैसे आप बताएं, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग समवन कि मुंबई में इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 2 साल बारिश नहीं हुई। इमेजिन दैट, जैसे इस साल लेट बारिश हुई और हमारे जो वाटर स्टोरेज है, हमारे पास खुद का पानी नहीं है। ये सिर्फ मुंबई की हालत नहीं, ना तो दिल्ली के पास, ना बेंगलोर के पास, ना चेन्नई के पास, जितने जितने भी शहर, इवन पुणे में भी है। सो हमारे पास अपने खुद के वाटर रिसोर्सेस नहीं, हम बाहर वाटर रिसोर्सेस में हैं, हमारे पास खुद का पानी नहीं, हमारे पास ग्राउंड वाटर नहीं। इमेजिन कि यदि मुंबई जैसे शहर में 2 साल बारिश नहीं हो, जहाँ पे वाटर स्टोरेज है हमारे, इमेजिन द सिचुएशन व्हाट विल हैपन। हमारे पास पानी नहीं होगा पीने के लिए, हैं?
ऑक्सीजन में आप देखिए, आए दिन मुंबई की बात करें, दिल्ली की मैं बात नहीं करना चाहूंगा बिकॉज पीपल टॉक अबाउट लॉट्स, और ऑलरेडी हमेशा न्यूज में रहता है दिल्ली जब स्पेशली ठंडी का सीजन आता है, पॉल्यूशन के टाइम में मुंबई की हालत खराब हो रही है। इवन वी हैव अ ह्यूज कोस्टल एरिया, कोलकाता की हालत खराब हो रही है। व्हाई? बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल। माई विजन इज दैट ईच एंड एवरीवन शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली कि हम बोल दें कि ये म्युनिसिपल का प्रॉब्लम है तो म्युनिसिपल करे या गवर्नमेंट करे, मैं क्या कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट ग्रीन यात्रा है, द विजन कि लेट्स कम टुगेदर, बी द चेंज, ब्रिंग द चेंज। सो दैट इज वेरी सिंपल। आप दूसरे पे ब्लेम गेम मत कीजिए, छोटा सा स्टेप आप ले सकते हैं अपने घर पे, एंड दैट इज व्हाट वी कैटर टू एवरीवन कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स के साथ जुड़िए, एंड देन यू विल सी थ्रू द अवेयरनेस कि हम क्या कर सकते हैं। एक हाउस वाइफ क्या कर सकती है, जैसे ने बोला, एक सीनियर सिटीजन क्या कर सकता है, एक कारपोरेट क्या कर सकता है, एक गवर्नमेंट कैसे ग्रीन यात्रा, और फिर उस चीज को कैरी ऑन कीजिए। वी नीड थाउजेंड्स ऑफ ग्रीन यात्रा काइंड ऑफ डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, मिलियंस ऑफ लाखों करोड़ों में इंडिविजुअल्स जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को इफेक्ट कर रही है, एंड देन वी कैन। सो दैट इज माई विजन। इमेजिन दैट व्हाट थिंग्स आई कैन थिंक अबाउट कि आप सुबह उठें और आपका 4 साल का बच्चा, उसके मुंह में सिगरेट, दैट इज लाइक अ स्केरी, एकदम नाइटमेयर की तरह, बट दिस इज हैपनिंग, इनविजिबल सिगरेट उनके मुंह पे लगा हुआ है। अभी कई सारे वीडियो एम्स का था शायद, शेयर हो रहा था सोशल मीडिया में कि जो 10 से 15 साल चैन स्मोकर है उसके लंग की कंडीशन, और 12 साल के बच्चे की लंग की कंडीशन जिसने कभी स्मोकिंग जैसी चीज करी ही नहीं, जानता भी नहीं, उसके लंग की स्टेटस ये। कोविड के बाद कितने लोग हैं जो दिल्ली जैसे शहरों में या मुंबई जैसे शहरों में नहीं रह पा रहे हैं। सो हाउ हाउ वी कैन फिक्स इट। सो दैट इज, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम एक छोटी सी कोशिश है, इतने बड़ी इंडिया में जहां 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वी आर वेरी लाइक अ स्मॉल एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इन द ओशियन, बट वी आर ट्राइंग एंड वी वांट कि ये बात लोगों तक पहुंचे, सारे लोग जुड़े। और जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ के ही करें, जहाँ पे भी हो आप अपने स्क्रीन टाइम्स दें, फाइंड आउट एंड बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब बाढ़ आती है हम हेल्पलेस हो जाते हैं, पूरे 2-3 घंटे में पूरी मुंबई डूब जाती है, दिल्ली डूब जाती है। लोगों में अभी हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हिमाचल डिजास्टर में पड़ा हुआ है, और रिकवर करने में जो होता है, पूरे बिहार में बाढ़ आई हुई है, मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और क्लाइमेट चिल्ला चिल्ला के नेचर हमें बता रहा है कि मैं, ये प्रॉब्लम है और ये बढ़ती ही जा रही है हर साल। सो वी हैव टू टेक द एक्टिव अप्रोच। सो दैट इज द विजन बिहाइंड की अवेयरनेस एक्शन, जहाँ सारे लोग इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना, वट एवर वी हैव, एंड हाउ वी कैन टू मेकिंग पीपल मोर अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट द नेचर, एंड हाउ दे कैन फिक्स दिस इशू टुगेदर, एंड फेस इट, एंड ट्राई टू रिवर्स इट। So it is so important from what you have said, sir, कि सब लोग आए and साथ में करे, only then can we Yeah, actually expect to see something kind of yeah, happen, and of course. hence it becomes so much important for us to come onto these platforms and speak about all of these things. There's another thing that you also mentioned, that Green Yatra is one of the major, largest, known NGO for plantations, right? So when Green Hmm, Yatra hmm, is so well established in plantations already, hmm. so what got you this idea to start these new interventions? As I said earlier, कि plantation should be the last thing to mitigate these issues. जैसे होता है कि कटिंग डाउन का, जैसे हमारे पास पहले, अभी यदि मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, पहले कचरा जो होता था आपका कहाँ जाता था, एक डंपिंग यार्ड्स होते हैं शहरों में गवर्नमेंट के, और वहां पे जाता था। गवर्नमेंट ने भी पहले बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थी, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वी हैड इनफ डंप यार्ड्स। बट अब वो डंप यार्ड पहाड़ों में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो अपनी कैपेसिटी में फुल हो चुके हैं। अब हमारे पास डंप यार्ड की जगह नहीं है, राइट। अब पीपल आर सो अवेयर कि आप कहीं दूसरी जगह जाके आप डंप यार्ड नहीं बना सकते हो। यदि उस डंप यार्ड का कचरा दूसरी जगह पे डाल रही हो, आप क्रिएटिंग अनदर डंप यार्ड। सो गवर्नमेंट सब क्या कर रही है, कटिंग डाउन वेस्ट एट द सोर्स। अपने घर पे आप कंपोस्ट कीजिए, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो अपने यहाँ यूनिट लगाएं, आप घर पे लगाइए। जो कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है वो अपना वेस्ट खुद मैनेज करें, कंपोस्ट पिट लगाएं,
सो मीन्स कटिंग डाउन कार्बन एट द सोर्स। उसी तरह प्लांटेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब जगह ही नहीं है हमारे पास। इफ यू गो इन सिटी लाइक मुंबई, जैसे हमने पिछले 2 सालों में लगभग 3 लाख से ज्यादा सैपलिंग हमने नवी मुंबई में लगाए। अब वहां पे जगह नहीं है। मुंबई में आप जाइए तो मुंबई में भी काफी सारा प्लांटेशन हुआ है, वहां पे भी जगह नहीं है। सो हर जगह पे जगह, इन द सिटी लाइक मुंबई दिल्ली, जहाँ एक स्क्वायर फीट लाखों की कीमत में जाता है, वहाँ, और एज ए सेट ओपन स्पेस भी चाहिए। हम प्लांटेशन तो कर नहीं सकते। सो दीज आर द थिंग्स, कटिंग डाउन कार्बन एट द सोर्स। Suppose you are doing any work, if I talk about any corporate, so you need, you know, you can cut down, you can use the different kinds of, you can do go for the carbon footprint audit, जो ग्रीन यात्रा भी करता है। So carbon footprint audit करते थे, you get the road map, okay, this is my carbon। Most of people don't know what is there, the water footprint, waste footprint, carbon footprint overall। So once you have a, okay, this is the carbon footprint we have, then how we can cut down at the source। मीन्स हम अपनी वाटर रिसोर्सेस को कम करके, नए फॉसेट लगा के, इलेक्ट्रिसिटी में हम नई नई चीज़ें कैसे करते हैं, कर सकते हैं। सोलार का कर सकते हैं, यदि सोलार पॉसिबल नहीं है तो सेंसर लाइट लगा सकते हैं। नई नई जो इनोवेटिव लाइट्स आ रही हैं जो कम कंजम्पशन करती हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। बट स्टिल यू नीड समथिंग, सम कार्बन टू रन द बिजनेस। आप अपनी लाइफ के लिए, जीने के लिए या काम करने के लिए, यू नीड सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी, आपको चाहिए ही चाहिए। उसमें दैट इज कॉल्ड इसेंशियल, यूटिलिटी एंड कार्बन थिंग्स। तो वो जो कार्बन जनरेट हो रहा है, तो इसेंशियल कार्बन को देन वी कैन मिटिगेट थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। यदि आपके पास, जैसे आपको वाटर फुटप्रिंट काफी ज्यादा है, तो उसको हम वाटर बॉडी रिस्टोर करके कहीं पे कर सकते हैं। देन यू कैन डू द सोलर पैनल इन द सम रूरल एरिया वेयर पीपल आर इन नीड। देन वी कैन डू द प्लांटेशन इन द अर्बन स्पेस। वो इसेंशियल का होना चाहिए। ये नहीं कि नहीं मेरे पास तो पैसे हैं, मैं 24 घंटे जितनी एनर्जी चाहूँ उतनी वेस्ट करूँ, मैं जितना पानी का टैप खोल के रखूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बिल पे कर रहा हूँ। यू डोंट ओन द नेचुरल रिसोर्सेस। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, वो सारे सब लोगों के। यदि आपकी बिल्डिंग है ना, तो आपके घर जो पानी आ रहा है सिर्फ आपका नहीं, वो जो टाकी आपकी छत पे, टेरेस पे लगी, वो सबको ओन कर रही है। इसी तरह हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, दिस इज ओन बाय द एवरीवन, इवन दे आर, पीपल आर रिच पुअर, दिस बिलोंग टू इक्वली टू एवरीवन। सो हमें इसेंशियल के लिए ही चाहिए। दैट्स व्हाई जैसे क्लाइमेट एजुकेशन है, ये पूरी अवेयरनेस देता है आपको कि हम कैसे कट डाउन करें कार्बन एट सोर्स। सो दैट इज माय फोकस की इन प्रोजेक्ट से यही है कि पब्लिक को हम कैसे अवेयर करें कि खुद ये कर सके, ताकि हमें प्लांटेशन की कम से कम जरूरत पड़े। सो दैट्स व्हाई देन मैन ग्रूव एक ऐसे रिसोर्सेज थे जो काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सो देन वी थॉट कि वी हैव टू डू द मैन ग्रूव थिंग्स। कंपनीज कैसे ये कर सकते हैं। सो दैट इज अ मोटिव बिहाइंड कि प्लांटेशन शुड बी द लास्ट सॉल्यूशन। एसेंशियल जो कार्बन है उसको मिटिगेट करने के लिए, नॉट द फर्स्ट सॉल्यूशन। कट डाउन द कार्बन एट द सोर्स थ्रू द चेंज इन द लाइफ स्टाइल, अवेयरनेस, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद द न्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सो सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पॉइंट आउट की है कि ये जो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, वो केवल एक पर्सन के ऐसा, इट्स नॉट एंटाइटल्ड टू एनीबडी, इट इज या समथिंग दैट इज फॉर एवरीबडी टू शेयर। सो दीज या आर सर्टेन थिंग्स दैट मे बी आप और मैं समझ पाएंगे, मे बी हमारे पार्टनर समझ पाएंगे, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू communicate these kind of things to certain people who are just focused on using and exploiting resources. So are there any hurdles that you face जब ऐसे projects वगैरह करने होते हैं कुछ लोगों की तरफ से या किसी और चीज की तरफ से? What are the hurdles that you think we face? सी सैनरा, कोई भी चीज जब आप शुरू करते हैं, इट्स नॉट इजी। सो इफ आई गिव द एग्जांपल एंड आई एम वेरी होपफुल कि नाउ व्हेन वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन 1.5 decade ago, लगभग 15 साल पहले, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता था, तो हम लोगों को फोन करके, कुछ कारकुन जिन्हें हम जानते थे, कंपनीज को या लोगों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है एंड कैन यू डू समथिंग। तो लोगों को लगता है अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज है। आज सिचुएशन ये है, इन जस्ट 15 ईयर, उस टाइम पे हम पूरा महीना इतना ब्लॉक होते हैं कि वी इन द पूरे जून मंथ में, मई जून में, वी गेट थाउजेंड्स ऑफ कॉल, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईमेल। सो नाउ पीपल आर वेरी अवेयर। पहले होता था 2 या 3% लोग होते थे, नाउ दे हैव कम टू द 15 to 20% में लोग हैं जो अवेयरनेस हैं। प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी यहाँ पे, राइट? देयर इज लाइफ में हर्डल हमेशा आते रहेंगे, बट वी हैव टू क्रॉस देम।
सो इफ आई सी दैट कि अभी भी 85% लोग क्या कहते हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं या 80% नहीं कर रहे हैं, इधर आई हैव टू सी दैट कि जहां 1-2% होते थे, एटलीस्ट 20% पीपल आर कमिंग देयर एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर सपोर्टिंग एंड दे बीइंग मोर अवेयर। सो आज जो पहले 15 साल पहले 1 या 2% थे, आज 15 से 20% हुए हैं। एंड आई एम श्योर कि बाय द नेक्स्ट 5 years, this 20 number 15-20% will convert in the 30-40% at least, and next decade में by 2030 I'm expecting कि at least 25 से 30% population. So that's a very good result we can achieve. Imagine that कि हमारी 140 crore population में से 30%, which is almost one third, one fourth population is being aware, it is multiplying. दैट्स व्हाई हमारे जो क्लाइमेट एजुकेशन हम क्यों ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों पे, कि सी वी ऑल द पीपल हु आर बिजी वर्किंग क्लास एंड ऑल, काम में इतने बिजी हैं कि और चीजों में टाइम नहीं मिलता। बट यदि आप मेरे से कोई चीज शेयर करते हैं ना, तो मैं अपने घर पे जाकर एनवायरनमेंट से चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। जनरली ये टेंडेंसी होती है, बिकॉज दैट इज नॉट इन अवर प्रायोरिटी, देयर इज एन नंबर। बट यदि आप यही चीज किसी बच्चे को बताएं, स्कूल गोइंग को, वो पूरे घर पे बताता है कि आज मैंने नई चीज ये सीखी, पापा हमें बिजली कम करनी चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, वाटर इतना हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कंपोस्ट करना चाहिए, व्हेन ही इज गेटिंग इन्वॉल्व। सो दैट्स व्हाई हमारा जो ग्रीन स्कूल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, एंड आई रियली लव इट। तो यदि आपको 1 से 10 लोगों में पहुंचना है, और जब ये हमारी यंग जनरेशन कारपोरेट में जाएगी, जॉब करेगी, एंड आई हैव सीन दैट कि हमारे यहाँ कई सारे वॉलंटियर्स हैं, नाउ दे आर इन द बिग कारपोरेट हाउसेस, और ग्रीन यात्रा इज ए पार्टनर एवरीवेयर, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट जहां जहां पे भी वो जाते हैं, सो दे आर स्प्रेडिंग। सो आई वांट कि दिस शुड बी द मूवमेंट, एंड वी होप कि क्या कहते हैं बाय 2030 या 2040 या 2047, जब इंडिया 100 ईयर में हो, हमारी मोस्ट मेजर पॉपुलेशन जो है ये रिवर्स होना, कि सिर्फ 10-15% है जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं चीजों पर, 85-90% लोग अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, कांटिंग डाउन कार्बन रिसोर्स। सो गवर्नमेंट में भी कोई ब्लेम नहीं कर रहा, एवरीवन वर्किंग कलेक्टिवली लाइक इन अ हार्मनी, एंड वी आर mitigating all the issues. That is such a positive outlook towards this entire problem है। जब क्लाइमेट चेंज इस सब के बारे में सोचे तो इतना इतना सैड लगता है, इतना दुखी लगता है। बट ये जो आपका पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स वो 85% तो ठीक है, बट एटलीस्ट these 20% have, this is such a nice and positive attitude to approach this problem. So would you want Sanda, to we leave? have to because we have seen 1%, so 15%, 20% is a big number for us. Exactly. That's what I mean. This has been such a long journey, 15 साल, and so much has happened over this time. So I am pretty sure कि आपका जो ये perspective बना है, ये बहुत सारे experience के साथ बना होगा. Yeah. So sir, आपको हमारे, do you want to leave our audience with some final notes on something that they should do that they can contribute towards for the climate? या सो आई विल से कि इंडिया का जो एवरेज स्क्रीन टाइम है वो लगभग 3 से 5 घंटे हैं। यानी हम अपने लैपटॉप को छोड़ देते थे, मोबाइल में मोस्टली पीपल आर नाउ यूजिंग द मोबाइल, सो कम से कम 4-5 घंटे का स्क्रीन टाइम होता है। सो डू वन थिंग, एटलीस्ट 5 to 10% आप तक आपके स्क्रीन टाइम का, उसमें से आप सर्च कीजिए कि हाउ टू बी द ग्रीन, शेयर अबाउट। आप ऐसे ऐप इंस्टॉल कीजिए जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके घर के आसपास का दिखाता है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि अच्छा कितना पॉल्यूशन है। एंड दिस विल बी द मोटिवेशन फॉर, इसे आप पॉजिटिव मोटिवेशन बोले या निगेटिव मोटिवेशन, जैसे मेरे इसमें है तो मैं खुद देखता रहता हूँ, अभी मेरे एरिया का 69 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो बारिश की वजह से और मानसून सीजन है, एंड आई हैव सीन समटाइम्स कि मैं 500 वाले एरिया में भी गया हूँ वेयर इट वाज 5 एंड इट वाज सफोकेटिंग। सो हमें ये करना चाहिए, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले आप अपने घर के आसपास, घर पे, जहाँ पे कि हाउ टू गो ग्रीन इन डे टू डे लाइफ, छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। इमेजिन दैट 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग कोई चीज यदि करते हैं तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। इमेजिन दैट कि जस्ट सिंगल बॉटल, और पूरी हम दुनिया की पॉपुलेशन करें तो ऑलमोस्ट 8 बिलियन बॉटल्स, तो सेम उसका आप रिवर्स करके देखिए, द पीपल आर सेविंग 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, सो कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी बचेगा, जस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर। सो दीज स्मॉल थिंग्स, आप सिर्फ बिजली बंद कीजिए जहाँ पे
छोटे छोटे स्क्रीन टाइम पे आप सर्च कीजिए, DY योरसेल्फ विथ योर किड्स, तो बच्चों के साथ कुछ ऐसा कीजिए, रादर देन टीवी चलाइए। जैसे मेरी डॉटर है छोटी सी, हार्डली स्क्रीन टाइम है उसका, और ऐसा नहीं हमने ही टीवी देखना बंद कर दिया है। तो सिर्फ सोचिए एनवायरनमेंट का भी कितना फायदा हो रहा है कि वी आर जस्ट, हमारे घर टीवी हार्डली चलता है, स्क्रीन टाइम उसका एकदम कम है। हम भी मोबाइल कम देखते हैं जब उसके सामने होते हैं, जहाँ जरूरत होती है वहीं पे होता है, काफी सारी चीजें। तो वी आर टीचिंग हर, और उसमें बच्चे बताया कि बताने से ज्यादा आपकी लाइफ स्टाइल से सीखते हैं, व्हाट यू आर डूइंग। सो डू समथिंग व्हाट एवर यू कैन डू दैट, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले सर्च कीजिए, विल गेट एन नंबर्स। आप, मैं आपको एक दो चीजें बताना नहीं चाहूंगा, जब आप ये 5-10 मिनट स्क्रीन अपना 5-10% स्क्रीन टाइम देंगे, हाउ टू हेल्प द एनवायरमेंट, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आपको एन नंबर्स ऑफ थिंग्स मिलेंगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द ग्रीन यात्रा में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स के लिए। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। ये जो हमारा 15-20% है ना, इसे बाय 2030 एटलीस्ट हम 30-40% पे लेके ही जाएं। जो 2030 द डिकेड ऑफ एक्शन चल रहा है, कि जहां आप बात ना करें, एक्शन लें। सो लेट टेक दिस एक्शन टुगेदर। ये सिर्फ गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेट्स जो डिकेड ऑफ एक्ट है, एक्शन हम करें और सारे लोग करें, और बाय 2030 हम इस नंबर को एटलीस्ट इंडिया में एटलीस्ट 30 से 40% को लेके जाएं। सो दैट इज माय मैसेज फॉर द पीपल, एंड वी कैन डू इट टुगेदर। एंड एज मच एज आई एम अवेयर सर, ऐसे हमारे थोड़े से कुछ साइट्स भी है ना जहाँ पर लोग देख सकते हैं प्लांटेशंस एंड विजिट वगैरह भी कर सकते हैं, राइट? सो आई ऑल्सो अर्ज Yeah. आवर ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो राइट नाउ, प्लीज गो आउट इन नेचर, यू नो, वो जो थोड़ा Yeah. सा जो है दैट विल बी मोटिवेटेड वंस यू नो एक्चुअली गो आउट इन नेचर एंड लर्न टू अप्रिशिएट इट। सो यस डेफिनेटली, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप जैसे ग्रीन यात्रा के जितने, यदि आप ट्विटर हैंडल में हैं, फेसबुक में हैं, यूट्यूब में हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे फॉलो, मुझे बहुत ज्यादा इससे ये नहीं होगा, बट आई वांट यू कि हमारी साइट्स कहाँ है। यदि आप नवी मुंबई में रहते हैं तो आप निसर्ग उद्यान में जाइए, जहाँ हमने 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हुए हैं, जहाँ पूरी एकदम बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट हो चुका है। नवी मुंबई में जैसे हमने ज्वेल ऑफ नवी मुंबई में 1,30,000, किसी शहर के अंदर ये सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है। इफ यू विल गो यू विल फील लाइक यू आर इन द ऑक्सीजन टैंक, फ्रेश, एक जंगल के अंदर है। आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जाइए, बेंगलोर में है तो बेंगलोर में जाइए, आप पुणे में है तो पुणे में जाइए, तो जहां पे भी आपको मिले, और हमारी भी साइट्स हैं, सो यू कैन फॉलो कि कहाँ कहाँ पे है। यू कैन कम फॉर द वॉलंटियरिंग, यदि आप नहीं आ सकते अपने बच्चे के साथ आइए। नेटिव नॉन नेटिव क्या है, सो हम अभी ये पूरी सीरीज ही चालू कर रहे हैं जिसमें वॉलंटियरिंग हर वीकेंड पे हम, या अल्टरनेट वीकेंड पे रखेंगे, लोगों में अवेयरनेस कर सकें, तो पीपल कैन कम एंड ज्वाइन अस and get the experience, and then multiply it in many folds with other people's. So, audience, here is your opportunity to actually learn and appreciate nature firsthand itself. And thank you so much, sir, कि आपने इतने elaborately अच्छे से आपका vision, नए projects, उन सबके ideas, everything that they consist of, everything has been shared in such a nice and lovely way. And I am sure that this session has actually motivated our audience to go out there and be the change and bring the change, as the tagline for Green Yatra is. Thank you so Thank you, much, thank you. sir. Thank Thank you, you. Chandra, for this beautiful session, and we'll look forward, for more beautiful session, because I know that you are doing a wonderful job, and especially you love about the children education and all the climate education. So we'll see more and more people join this movement, and I would like to thanks to all supporter of the Green Yatra, especially our team is our backbone. I'm just a small part of whole Green Yatra team. So all work is done by our team. Sandra is one of them, Nidhi is there, Siddharth is there, Bhavesh is there, Ambika is there. So हमारी पूरी टीम है, जो मैं और दुर्गेश ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था. So we are all working together to do what we can do that. So we are a passion run organization, and if you are passionate about environment, let's make it happen together. Thank you. Definitely we will. Thank you so much, sir. And see you all next Saturday. Yeah, sure. Thank you.